हाय दोस्तों, हेलो एंड गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले इन पोस्टिंग वीडियोस। काफ़ी लंबा समय जो है वो जा चुका है। कुछ इश्यूज थे पर्सनल एंड पे, हेल्थ क्राइसिस थे और इस वजह से मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाया हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी लॉस हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो उसको हम कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर, राइट? तो चलिए विदाउट डिले लेट्स बिगिन विद टुडे सेशन। So look at the first question. With reference to the places in news, consider the following pairs. The first one is the Ras Lafan industrial area. Is it in Iran? No, that's not correct. That is in Qatar, right? So that's not in Iran. That is not matched. Look at the second one, the South Pars gas field. See, it is one of the largest gas fields of the world and it is shared between Qatar and Iran and not in UAE, right? So both the pairs are incorrectly matched here. Question is, which of the pairs given above is oblique are correctly matched? So neither one nor two. D for Delhi should be the correct answer, right? And why we picked up this question? So there is a strong reason. When energy becomes a weapon, Iran's South Pars and Qatar's Ras Lafan, and the fires burning across the Gulf, right? So Middle East is in the crisis. एंड आप यहाँ देखिए कि कतार का जो लगभग 17 to 20% जो गैस प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, राइट? एंड अभी आपने नोटिस किया होगा कि ईरान को थ्रेट दिया है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर विद इन 48 आवर्स के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं किया गया, तो वो ईरान के पावर प्लांट्स जो हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उस पर अटैक करेंगे। ऑल्दो अभी इस थ्रेट के ठीक बाद, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस थ्रेट आने के कुछ समय के बाद ही उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो टॉक्स हैं, टॉक्स आर अंडर वे एंड 5 दिनों तक के वो कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो 5 डेज तक के इसको हॉल्ट कर दिया गया है। और आप मार्केट्स के अगर हालात देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि गोल्ड और सिल्वर जैसे जो सेफ हेवन एसेट्स हैं, तो गोल्ड और सिल्वर आज 9% के आसपास गोल्ड गिरा था और सिल्वर जो है वो पास कपल ऑफ डेज में लगभग 25 to 30% तक के टूट चुका है। तो जैसी न्यूज आती है वैसे एक शार्प यहाँ पे एक स्पाइक आता है गिफ्ट निफ्टी में भी और गोल्ड एंड सिल्वर में भी, राइट? सो देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो गैप अप ओपनिंग होगी, राइट? सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दैट साउथ पार्स गैस फील्ड इट इज शेयर्ड बिटवीन बोथ द कंट्रीज ईरान एंड कतार, राइट? चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। So, question number two, with reference to the sixth schedule of the Constitution of India, consider the following statements. The first statement says, the sixth schedule under Article 244 of the Constitution of India, it provides for the formation of the autonomous administrative divisions. Absolutely correct. So, it is given under Article 244 and under Article 275, right? So, second statement says the provisions of the sixth schedule apply only to the tribal areas in the state of Assam. No, that's not correct. See, अगर हम बात करें like sixth schedule के provisions की, so it is applicable in 4 states: Assam, Meghalaya, right? Assam, then Meghalaya, Tripura, and Mizoram, and a total of 10 autonomous district councils are operating in these 4 states. राइट? सो डू रिमेंबर, ऑल्सो रिमेंबर कि ऑटोनॉमस काउंसिल्स जो हैं इनके पास में कुछ सर्टेन पावर्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, राइट? एंड यहाँ पे टैक्सेशन के पावर्स भी इनको मिले हुए हैं। ऑल्सो रिमेंबर कि ये प्रोविजंस इसलिए लाए गए हैं ताकि फॉरेस्ट एरियाज में जो ट्राइबल्स हैं उनके लैंड राइट्स, उनके कस्टमरी राइट्स को प्रोटेक्ट बनाए रखा जा सके, उनको इंटैक्ट बनाए रखा जा सके, राइट? ऑल्सो रिमेंबर कि फॉरेस्ट के कुछ एरियाज पे लॉज बना सकते हैं जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट शामिल नहीं है, राइट? तो रिजर्व फॉरेस्ट पे लॉ नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली वन, राइट? सो क्वेश्चन था विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट? सो ओनली वन, सो ए फॉर अहमदाबाद शुड बी द करेक्ट आंसर, right? So look at the explanation part. You can see here the sixth schedule applies to the tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram, and not just in Assam, right? Chaliye. Now let's move on to the next question. So look at the third question. The Pragyata guidelines introduced by the Ministry of Education, it aims to ensure what? It aims to ensure the safety and the academic welfare of the students by recommending age-appropriate screen time limits. So D for Delhi should be the correct answer here. ये factual question था, so will not be explaining this, right? चलिए आगे move करते हैं. Look at the fourth question. With reference to the Mahat Satyagraha, consider the following statements. The first statement says,
It was led by Dr. B.R. Ambedkar to assert rights of the Dalits to access public water sources. Absolutely correct. See, this satyagraha was launched by Dr. B.R. Ambedkar in 1927, where in the Raigad district of Maharashtra. So, ये जो location है Mahad, it is situated in Raigad district of Maharashtra, right? Second statement says the movement involved a symbolic act of drinking water from the Chavdar tank to challenge the caste-based restrictions. Again, correct. The third statement says the move immediately resulted in a legal victory in favor of Dalits in same year. No, that's not correct. ये थोड़ा सा extreme statements है. Be attentive. So third one is eliminated here, right? So third statement is eliminated, and the last statement says the Manusmriti was publicly burned as a rejection of the caste-based social hierarchy. This is correct. So three statements are correct here, 1, 2, and 4. Which of these statements given above is oblique are correct? So B for Bombay should be the correct answer here, right? So look at the statement, look at the explanation part. The Mahad Satyagraha was led by B.R. Ambedkar to secure equal access to the public resources for Dalits, right? And the act of drinking water from the Chavdar tank was a powerful assertion against caste discrimination, right? And the legal victory came much later in 1937 and not immediately in 1927, right? So it took almost a decade, right? So याद रखिएगा. I hope you guys understood. चलिए, now let's move on to the next question. अभी हाल ही में इस पे का आर्टिकल पब्लिश हुआ था, इसलिए हमने इसको पिक किया है. Now let's move on to the question. Look at the question number 5. Which of the following sectors are not included under the critical information infrastructure in India? So power and energy, yes. Banking and financial services, again yes. Telecom, yes. Tourism, no. Transport, yes. So select the correct answer using the code given below. B for Bombay should be the correct answer. So tourism sector is not counted as the critical information infrastructure in India. So B for Bombay should be the correct answer here, right? So I have already explained you about the mechanism. When the National Critical Information Infrastructure Protection Center was set up, it was set up in 2014, and it directly reports to whom? To the NTRO, right? And it was set up under Section 70A of the Information Technology Act 2000, right? चलिए आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So look at the question number 6. With reference to the Minamata Convention on Mercury and COP6, consider the following statements. The first statement says the members agree to a global phase out of the dental amalgam by 2034. Absolutely correct. See, a total of 22 agreements were signed in the COP6 of the Minamata Convention on Mercury, and this COP6 took place in Switzerland, Geneva, and not in Tokyo. So the second statement is incorrect here. Question is, which of these statements given above is oblique are correct? So only one, A for Ahmedabad, should be the correct answer here, right? So look at the explanation part, just a moment. So you can see here. अच्छा, यहाँ जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है इसमें आंसर जो है वो लाइक गलत है. यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली वन. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है दैट इज करेक्ट, एंड द स्टेटमेंट नंबर 2 जो है दैट इज इनकरेक्ट, राइट? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ए फॉर अहमदाबाद. याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, करेक्शन कर लीजिएगा. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी question number 7. With reference to the western disturbances, consider the following statements. The first statement says they are east moving rain bearing wind systems that originate beyond the Iran. Absolutely correct. They originate in the Mediterranean region, right? In the Mediterranean Sea. So second statement is they cause heavy rainfall in the southern India, especially over the Tamil Nadu and Kerala. No, that's not correct. They cause heavy rainfall where? In the northwestern and the western India, right? Third statement is they are common in the summer months. No, they are common in the winter months, not in the summer months, right? So winter rainfall लेकर के आते हैं. So third statement is also correct. Question is how many of these statements given above is oblique are correct? So only one statement is correct here, right? So now let's move on to the explanation part. So you can see here, western disturbances are the eastward moving extratropical cyclones originating in the Mediterranean region beyond Iran, right? And they mainly affect the north and the northwestern India and not the southern India. And they are most active in the winter months and not in the summer months, right? So what is driving the early summer and the heat wave conditions in the north India, right? So I hope you guys understood. ये article publish हुआ था western disturbance के regarding, इसलिए हमने इसको pick किया. Now let's move on to the next question. So look at the question number 8. Consider the following statements. Statement number 1 says, according to the United Nations Conference on Trade and Development, India is the second largest exporter of telecommunications, computer,
information services in the world. Absolutely correct. The second statement says, according to the UNCTAD, India has over 20% share in the global export markets. No, that's not correct. That is not 20%, that is 10 percentage, right? Close to 10 percentage. The third statement says, India has steadily accounted for the third largest share in the global services export over the last decade. No, that's not correct. यहाँ जो term लिखा हुआ है steadily, that is not correct, right? So both these statements, statement number 2 and statement number 3, both are incorrect, but the statement number 1 is correct, right? So do remember, both the neither statement number 2 nor the statement number 3 is correct. So D for Delhi should be the correct answer, right? Chaliye. So you can see here that neither statement number 2 nor the statement number 3 is correct, right? So correct explanation है. आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9. Consider the following statements. Statement number 1, the peninsular rivers are older than the Himalayan rivers. Absolutely correct. See Himalaya basically एक young फोल्डेड माउंटेन रेंज है, और यहाँ से जो रिवर्स फ्लो कर रही हैं वो काफी यंग रिवर्स का एग्जाम्पल है. तो चाहे वो गंगेज हो या फिर यमुना हो, जितनी भी रिवर्स हैं ये सब यंग रिवर्स का एग्जाम्पल है. वो काफी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं विद हैवी वॉल्यूम. So statement number 1 is absolutely correct that the peninsular rivers are older than the Himalayan rivers. Second statement says peninsular rivers are non-perennial and flow over ancient crystalline rocks. This is again correct. They are the example of the non-perennial rivers. मतलब water जो है that is not available 24/7. It depends on the monsoon, the availability of the monsoon, right? तो अगर monsoon favorable होगा तो यहाँ पे water जो है available होगा. अगर monsoon deficit है, in that case यहाँ पे भी water deficit होगा in rivers में. Right? So second statement is equally correct. They are the non-perennial rivers, right? चलिए. So look at the third statement. They exhibit the youthful topographic features such as the V-shaped valley and the gorges. No, that's not correct. ये किसका फीचर है? ये फीचर है बेसिकली हिमालयन रिवर्स का. तो जो V-shaped valleys होती हैं, जो gorges होती हैं, ये कौन फॉर्म करता है? ये हिमालयन रिवर्स फॉर्म करती हैं, राइट? याद रखिएगा. So which one of the following is correct in respect of the above statements? Statement number 1 and statement number 2 जो हैं दोनों करेक्ट हैं. Statement number 3 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? So just moment. So यहाँ पे only one of the statements number 2 and statement number 3 is correct, and that explains the statement number 1, right? So C for Calcutta should be the correct answer here. Now let's move on to the last question. So question number 10, and this is going to be the last question of today's session. How many of the following countries border both Israel and Iran? Iraq, no. Syria, no. Jordan, no. Right? So correct answer क्या होगा? D for Delhi. None of the countries forms border with both Iran and Israel. So look at the explanation first. एक बार मैप देखिए आप यहाँ पे. देखिए इस रीजन से क्वेश्चंस आना लगभग तय हैं, राइट? अब आप यहाँ देखिए, दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और यहाँ आपके सामने है इजराइल, राइट? अब यहाँ इजराइल फॉर्म्स बॉर्डर विद सीरिया बट नॉट विद ईरान. इराक फॉर्म्स इट्स बॉर्डर विद ईरान बट नॉट विद इजराइल, राइट? तो आप यहां पे देख सकते हैं जॉर्डन इट फॉर्म्स बॉर्डर विद इजराइल बट नॉट विद ईरान. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? नो कंट्री बॉर्डर्स बोथ इजराइल एंड ईरान, राइट? तो इस एरिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स पता होना आपको बेहद जरूरी है. उम्मीद करता हूं यू गाइस अंडरस्टूड द इंटायर लाइक कॉन्सेप्ट. आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. सो प्लीज बी विद अस, एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब इन सेशंस को एंजॉय करेंगे और अपने फ्रेंड्स एंड अपने कंपेनियंस को शेयर करेंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.